हेलो वेलकम नमस्कार, यू आर वाचिंग हाउसेज कंसल्टिंग और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी। और आज हम आगे हैं आदित्य वर्ल्ड सिटी गाजियाबाद एयू रियल एस्टेट का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट रिव्यू करने, द सनफ्लावर। जी हाँ, द सनफ्लावर को हमने पिछले साल भी कवर करा था, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द एक्चुअल फ्लैट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. This video is going to be very interesting. I will cover all the construction updates, the amenities and the pavement plan. So stay tuned till the end. Well, AU Real Estate is the luxury vertical of Aditya World City. They have covered many projects like AU Aspire Leisure Valley in Tech Zone 4, Greater Noida West, AU Aspire Silicon City, Sector 76 Noida, AU Family Hub, that's a commercial development in Aditya World City. And I believe AU Real Estate is a fast pricing developer in the NCR region, because they have strong backing as they partnered with NDCC on Supreme Court monitored project Aspire Leisure Valley Phase 2, which reduces risk for buyers. Secondly, because they focus on luxury high rises and large townships. They are strategic because they use Maivan construction for speed and reliable construction. And while the AU brand is newer, the leadership of Aditya Builders has 40 plus years of experience in the region. What I believe is that they are credible, mid to high tier developer best suited for buyers looking for luxury amenities. So look, investing in AU the Sunflower within this 185 acres Aditya World City is complete strategic masterstroke for you. They are positioned directly on the 14-lane Delhi-Meerut Expressway known as NH24, which means you will be just 30 minutes away from the heart of Delhi and only 20 minutes from Noida Sector 62 and 18 hubs. In real estate, zero bottleneck access like this translates directly into high yield appreciation. In fact, ये NH24 कॉरिडोर पिछले 3 साल में 105% ग्रोथ देख चुका है. बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रोड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द लाइफस्टाइल जो कि ये लोग आपको और आपकी फैमिली को ऑफर कर रहे हैं. यू आर गेटिंग अ मैच्योर वॉकेबल इकोसिस्टम जहाँ सब कुछ आपके डोर स्टेप पे होगा. For your daily needs and global brands, AU Family Hub यहाँ पे बिल्कुल पास है, featuring region's largest D-Mart and the trendy Zudio store. We also have Aditya City Center and Aditya City Grace Commercial providing a premium mix of retail and dining options. And education and health are equally elite with institutions like Gurukul the School, IMS Ghaziabad, Ajay Kumar Garg are literally minutes away. For healthcare, world-class Manipal Hospital is right in your neighborhood. Plus, township के अंदर ही serene श्री जगदम्बा मातृमा मंदिर का होना adds that rare spiritual touch जो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है. Well, if you want a detailed review of the project details of the Sunflower, you can check out this link above. And अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप दूँ तो यहाँ पे जो लैंड पार्सल है दैट इज़ 10.5 एकर्स. यहाँ पे 7 टोटल टावर्स आएंगे. फेज़ 1 में 5 टावर्स हैं, फेज़ 2 में 2 टावर्स आएंगे. एंड यहाँ पे टोटल यूनिट काउंट जो है वो 595 यूनिट्स का रहने वाला है. एंड दे ओनली हैव 2 साइजेस. वन इज़ 2975 एंड द अदर वन इज़ 3800. 3800 वाला जो है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर द 4 BHK वन. एंड इसी का एक्चुअल फ्लैट हम आज रिव्यू करेंगे. 2975 3 BHK का साइज रहने वाला है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल टावर लॉबी फॉर द सनफ्लावर. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. Now, before we showcase you this sample flat, I would just like to add that why the size here is functionally better. The extra square foot in the Sunflower isn't just empty space. It is utilized for specific high-end requirements that competitors lack in this area. Internal layout. Every unit includes an entrance foyer, a dedicated puja room. Standard luxury projects nearby often sacrifice these to fit more bedrooms into a smaller footprint. Toilets per unit. A 3 BHK at the Sunflower comes with 5 toilets, whereas typical 3 BHK in the area offers only 3. There's a dual master bedroom layout.
The layouts are designed with 2 master bedrooms catering to multi-generational luxury living. And then there's outdoor space. The units feature wide and long deck balconies rather than standard 4-5 feet wide balconies found mostly in NH24 high-rises. So welcome to the 4 BHK 3800 square feet apartment. This is going to be your double door entrance and इतने सारे आपको मैंने सैम्पल फ्लैट्स दिखाए हैं और मैंने आपको बताया फॉयर एरिया. लुक एट दिस फॉयर स्पेस. दिस राइट हेयर विल बी द गेस्ट वॉशरूम और द सर्वेंट क्वार्टर एज वेल, एंड द फ्लैट दैट आई एम शोइंग यू विल बी द 4 BHK प्लस पूजा प्लस सर्वेंट क्वार्टर. सो दिस विल बी योर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, एंड इसके साथ आपको पूरी डेक बैल्कनी आ जाती है. दिस विल बी आवर फर्स्ट बेडरूम राइट हियर. Grand space in your first bedroom, and this will be your connected deck balcony. Look at the dresser here. Great space and your attached washroom as well. Let's explore the second bedroom right here. Now the best part that I believe is the bedrooms with wooden flooring here. I love the space, and हर बेडरूम में आपको एक ड्रेसर मिल जाएगा, हर बेडरूम में आपको एक बालकनी मिल जाएगी, एंड दिस इज़ अ ग्रेट स्पेस फॉर अ 4 BHK. यूजली ऐसा नहीं होता है कि 4 BHK में आपको जेन्युइन स्पेस मिले फॉर अ बेडरूम एंड योर वॉशरूम्स, बट यहाँ पे आपको अच्छी स्पेस मिल रही है. एंड नाउ दिस हियर इज़ गोइंग टू बी योर पूजा रूम. पूजा रूम में भी अच्छी खासी स्पेस दी हुई है. नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड मास्टर बेडरूम. द सेकेंड मास्टर बेडरूम इसलिए क्योंकि फर्स्ट मास्टर बेडरूम भी है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड वन. फर्स्ट वन आई विल शो यू. दिस ऑल्सो कम्स विद इनबिल्ट वॉशरूम्स एंड द कनेक्टेड बैल्कनी. नाउ लेट्स एक्सप्लोर दी किचन. किचन में खास बात यह है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो डिस्क्लेमर, ऑल यू सी इज़ द पार्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट. दैट मीन्स वॉट एवर यू सी इन दिस किचन, आपको सब कुछ मिल रहा है. एवरी थिंग यू सी हियर इन दिस मॉड्यूलर किचन, द अपर लोअर कैबिनेट्स, द हॉब, चिमनी, एवरीथिंग, डबल सिंक, every single thing is included, and even the microwave, oven, refrigerator. You're getting every single one of it, and साथ ही साथ you are getting a good utility space here as well, and this utility space is connected with the servant quarter as well. So now let's explore the master bedroom, and this is your huge grand master bedroom. All the bedrooms come with VRV ACs, and इस मास्टर बेडरूम की खासियत इसके ड्रेसर में है. लुक एट द स्पेस, लुक एट ऑल द कैबिनेट्स, एवरीथिंग यू सी हियर. हर काम आपको यहाँ पे completely डन मिलेगा. इवन द वॉशरूम्स हियर आर वेरी ब्यूटिफुल. All the CP fittings, all the sanitary fittings will be included here. And look at this grand deck balcony. I mean, ये I think is the highlight of the whole flat here. इतनी अच्छी खासी space आपको यहाँ पे मिल रही है, and I think this is amazing. So to conclude, I would say AU the Sunflower isn't just another high-rise. It's a collection of 595 big airy units in a market saturated with small apartments. And if you look at the bigger picture, these are the 4 pillars that make this the best decision you can make today. One is the luxury of volume. While everyone else is selling the area, AU is selling the space. With an 11.5 floor-to-floor height and units starting from 2975 square feet, the feeling of openness here is something you will not find anywhere else on NH24. It is the difference between living in a flat and owning a grand space. Second, unmatched privacy. 3 units, 4 lifts, one of them being the service lift. Well, this is the project's secret USP. Having only 3 families per floor served by 4 high-speed elevators means 0 wait times and absolute privacy. You are buying into an elite, low-density community where your peace is protected. 3. Inflation-proof move-in specs.
We are handling your home with Italian marble, VRV air conditioning, and a fully loaded modular kitchen. As costs of materials rise, the value of these pre installed luxury fittings will make your property's resale value skyrocket by the 2029 possession. And finally, the fourth point, the Aditya World City ecosystem. You are sitting in a 185 acres mega township that is already alive with the Sri Jagadamba Matriuma Mandir for peace, AU Family Hub, DMart Zudio for convenience, and Manipal Hospital, Gurukul School for essentials, all on a 14-lane expressway. The location is invincible. So the bottom line is that you are catching the first mover advantage in a low density project while the NH24 corridor is still in its massive growth. In 5 years, when this is fully ready, a project of this scale and specification will be the most in demand address in Ghaziabad. And this is the payment plan, a construction link plan where the payment is made in stages based on the project's progress. And the construction update is the building has reached the construction of 18 floors. And well, this was all about the project, the Sunflower. If you are interested in this project, do contact Housage Consulting on 875,000 5008, or you can WhatsApp us on the same number below. Well, thank you so much for watching this video till the end. This was your host and host Kushi with camera person Bhavna signing off.